जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित Hare Krishna, please accept our humble obeisances to Srila Prabhupada, Guru and Gauramka. I express my heartfelt gratitude and warm welcome to all the attendees, especially the senior Vaishnavas of the International Society of Krishna Consciousness. I also extend my heartfelt gratitude to all the present present on Zoom, YouTube, Facebook, etc. In particular, I want to extend my warm welcome to the organizers who have organized this beautiful katha in the reverie of their ancestors and to get pure devotional service of the Lord. So, from Atlanta, Brinda Gopika Mataji and Patel family, from Peru, South America, Kamla Mataji, Shyamji Prabhuji, Pambani, and from Virginia, Shivani Singh, Malhotra and Baghel family. So, on this auspicious month of Kartik month and the Katha of Damodar Ashtakam on the fifth day of the 312th Katha, I pay my humble obeisances at your lotus feet. Radhe Shyam. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. ये माता जी नमाज पढ़ रही है कि नाम ले रही है? बहुत अच्छा भाव था। परम सौभाग्य है जब बंदा भाव में आ जाता है, फिर बाहरी ज्ञान नहीं रहता, चाहे ये हो चाहे ये हो, या कुछ ऐसे होते हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार last 4 days we have been constantly listening to the Damodar Ashtakam, and the listeners who have special affection towards Bhagvatam or towards Ramayan will have a question that why this Damodar Ashtakam? And the Shastras mention that in Padma Puran there is a stotra named Damodar Ashtakam. So I told that on the first day, and now I'm repeating that it's not a song, it's a stotra. And
And the stotra is like God, eternal and always existing. So, Lord Damodar is prayed through this Damodar Ashtakam. So please listen carefully as this is something new. So if someone sings this Damodar Ashtakam and offers a lamb to Lord Damodar throughout the Kartik month, then what is the fruit that we get? So we get the akarshan or attraction towards Lord Damodar. The Lord will have his eyes on us, and when his eyes are set on us, then what more do we require? Lord's eyes are so powerful that he can arise the dead. So his eyes are attracted towards us if we offer the lamb and sing Damodar Ashtakam. And this has been udit or risen. So what does uday means? Every day the sun rises. So that doesn't mean that the sun has taken the birth. It's not the sun's birthday. The sun has arisen and sets in the evening doesn't mean that it's the rebirth. It's not written by Satyavrat Muni but manifested by him. आगे बहुत सुंदर कहते हैं, घृतेन दीपको यस्य तिल तेलेन वा पुनः। जब भगवान को दीप अर्पण करते हैं तो दो ऑप्शन है। So when we offer the lamb to the Lord, there are two options. First is ghritam or ghee of the cow or through sesame oil. And if we offer the lamb by these two oils, then in the second line, that lamp is not the fire of the lamb, but the fire of the sacrifice of Ashwamedh or horse sacrifice. How much things need to be accumulated to perform the horse or Ashwamedh yagya, but the result can simply be presented to us by just offering the lamp to Lord Damodar. And moreover, on your screen,
करोड़ों करोड़ों कल्प से यदि कोई सहस्त्र सहस्त्र पाप करता है, And if somebody has done, बहुत बहुत पाप भी taken क्यों न किया हो, millions and billions of lives and done अधेन दीपस्य huge amounts of कार्तिके। इस sins or कार्तिक pap, महीने में यहाँ दीप जलता है और वहां the हमारे करोड़ों sins करोड़ों get पाप all जलते हैं। the burnt. तो ये भी चिंतन करने लायक विषय है So we need कि जब to हम दीप think अर्पण कर रहे हैं तो दीप की लपट में और all लहरों में this वहां when we हमारे are पाप offering the जल के lamb. भस्म So होते we हैं। should think and imagine that पाप our तो बहुत sins किए are हैं, getting तो burned दीप दान भी बहुत by बार just करना offering पड़ेगा the ना, lamb एक दो बार से to तो होगा Lord नहीं। Damodar. So as we have sinned so much, it's निमिषार्थे not दीपस्य going to विलेहि work if we कार्तिक। do हमारे it. सारे पाप उसमें विलीन हो जाते हैं, उस दीप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। So we need to do सुनो it सुनो on a regular सुनो, basis. मैंने क्या So, श्लोक में लिखा है, श्रुणु सुनो दीपस्य महात्म्यम, ये कार्तिक में दीप so अर्पण let's करने की listen महिमा to सुनो। the glories of श्रुणु offering the दीपस्य lamb महात्म्यम to कार्तिके the केशवाय Lord प्रियम। in the holy month of Kartik. ये दीपदान कार्तिक महीने में केशव को, कृष्ण को बहुत प्रिय है। और यदि कोई दामोदर अष्टकम गाते हुए दीपदान Offering the lamb to the Lord दीपदानेन is विप्रेंद्र very न much पुनर्जन्म यते भूय। appreciated or loved by the कार्तिक महीने में Lord. दीपदान करने वाला व्यक्ति इस It is भूमि पर, Keshav धरती Priyam. पर पुनः दूसरी बार जन्म नहीं लेता है। And the one who offers the इस lamb जन्म मृत्यु to जरा the व्याधि के Lord चक्र में on और this इस month जन्म मरण के will बंधन में never पुनः be नहीं born फंसता है, again. यदि कोई He gets liberated दीपदान कार्तिक from महीने में this करता है। material existence of और अंत में birth and death तो हम साल भर again and again. हरि नाम जप करते हैं, So कभी we कभार chant the कोई holy व्रत name करते हैं, and कोई यज्ञ we करते हैं। do अभी आज some ही मेरा पता चला कि austerity. अब मुझे जाना है अमेरिका से भारत, और जैसे ही फ्लाइट पकड़ूंगा तो एकादशी शुरू हो रही है। So as I'm traveling to India, अब एकादशी में फ्लाइट में ही एकादशी during my flight, खैर, there will तो be जितना Ekadashi घर में Vrat. भगवान की अर्चना कथा कीर्तन हरि भक्तों का संग करके एकादशी रहते हैं, उतना तो आकाश में नहीं रह सकते ना। So तो मैं ये the कह रहा हूं austerity कि that we अगर can साल भर perform by staying in our हम home during the अनेकों Vrat व्रत रखते हैं, जप करते हैं, is तो उस not व्रत में, उस compared जप में to कहीं ना the कहीं कमी austerity होती that है। I will try to do during my flight. वैसे हम कमी रखना नहीं चाहते, लेकिन अब कलयुग So, है, माया का प्रभाव है, although भुलक्कड़ we स्वभाव है। want to माताएं तो फिर भी fully याद रख लेती हैं, हमारे devote तो दोपहर को 12 बजे ourselves, वो भजिया खाते ना, तब मुंह में भजिया होता है, याद आता है, अरे ये तो आज तो एकादशी थी। but as we are in the Kali Yuga, we keep forgetting, कठिन है, and it's लेकिन बहुत tough सुंदर पद्म to पुराण श्रीमद, remember सॉरी ये and स्कंद पुराण का perform श्लोक है, स्कंद पुराण में austerity कहते हैं through Vrat. मंत्रहीनम क्रियाहीनम शौचहीनम जनार्दने। यदि साल भर मंत्र में कोई गड़बड़ हो गई, So throughout the year, कर्म हमने किया, कर्म if कांड किया, we have यज्ञ किया, जप performed किया, व्रत karma किया, kanda or yajnas or हमने जो भी sacrifices अनुष्ठान पूरे साल भर किए हैं and या करने वाले whatever हैं, और उनमें कहीं ना कहीं कमी austerity रह ही जाती है, we have done और throughout the यदि कोई year, कमी रह and गई हो there is, तो if कहते there हैं, is दूसरी लाइन some, में देखिए, and I'm sure सर्वस्य there दुर्गताम must याति। be some जो साल shortcomings, भर में की then हुई व्रत में, जप में, क्रिया कर्म में then जो भी कमी रह गई the है, shortcomings that सर्व we have संपूर्णता, performed वो सब throughout the संपूर्ण हो year, जाएगी। क्या करने से? that can याति be कार्तिक के दीप दान है। fulfilled if we just कार्तिक महीने offer में दीप दान करने the से lamb साल during भर the की holy month सारी of जो Kartik अधूरी to the Lord. व्रतों में, उसमें जो कमियां हैं, वो सारी पूर्ण हो जाती हैं। आप लोगों की तो कोई कमी नहीं, आप तो सब साधु महात्मा हो, ये हम जैसे लोगों की बात है So this कि is भाई about people किसी like me, अनुष्ठान not में like कोई you who चीज are all अधूरी रह perfect. गई, कमी रह गई,
So if there is some shortcoming, then by just offering the lamb, that will be fulfilled and complete. So the glory of Kartik and offering the lamb is so much that even 7 days katha can be performed on that. As you have been offering this lamb since so many years, as you already have faith, and so instead of going to the glory of the Damodar Ashtakam, let's move further into the meaning or interpretation of the Damodar Ashtakam. So, this is our humble trial to discuss it in detail. So, we have discussed so far till verse 5. And if I ask you a question that if the Lord wants to present himself in front of a devotee, then what would be the process? How will Krishna present himself? So, as we come through flight or car to meet each other, so let's open the scriptures. And we have an example of Dhruv Maharaj who went to Vrindavan and while Dhruv Maharaj was meditating on him, he came to his mind first and then presented himself in front of his eyes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. सो भागवत के दशम स्कंद में भी वर्णन है. So, in the 10th canto of the Bhagvatam, there is a description that when Krishna wanted to present himself, I have told it many times, you have heard it. So, first, Krishna appeared in the mind of Vasudevji and then in the heart of Devaki Mata. So, this Damodar Ashtakam is very philosophical. And here, Satyavrat Muni is praying to the Lord. And what does he says? बिंब रखता धर्म में मनस्या विरास्ता अलम लक्ष्य लाभ है. पिछले चौथे श्लोक में भी यही कहा ना कि भाई मेरे मन में सदा सदा के लिए. In the 4th verse and in the 5th verse he says that please be there in my mind. Just bless me that your form should always be in my memory and in my mind. So in 4th and 5th verse, describing the beauty of the Lord, he prays that your form should always manifest in my mind. इसलिए तो तुम सांस ले रहे हो. So if Krishna says that you're alive because I'm sitting as Paramatma in your heart, so I'm already there, then why you want me twice? Then Satyavrat Muni says that you
reside as Paramatma in everyone's heart, but your, your beautiful pastime of a child performing the pastimes as a Bal Gopal, that beautiful form I want to remember always eternally in my heart and mind. So we need to focus, as in both fourth and fifth verses it's mentioned that he should be in our heart, man. So we should have his form in our heart. And that is very important and significant. Sometimes we have seen people see roaming, running here and there to just see the form of the Lord, to find the God. So we don't need to run here and there because the God manifests in our heart. And that is what Satyavrat Muni is asking as benediction. So, to understand this philosophy, let me share a short story. The same Sanatan Goswami has written Brihad Bhagavatam, and there is a pastime of Gop Kumar. So Gop Kumar meets 9 sons, Yogeshwar, sons of Rishabdev out of the 100. तो एक हैं पिपलायन. So out of them, there is one named Piplayan. There are many meanings at why he was named so, but I don't want to go into that detail now. So let's imagine there was one guy, Gop Kumar, and he was roaming here and there to meet the Lord. And he found Piplayan Muni in the forest, who is the son of Rishabdev. So we are talking about man or heart, how to manifest heart, God in our heart. So that is being discussed in this pastime. So in Brihad Bhagavatam, the shlo or verse in front of your eyes. So Piplayan Rishi is telling Gopkumar this, that why you are roaming here and there. इतना अच्छा स्थान छोड़कर कथम That, क्यों यहाँ वहाँ भटक रहे हो? that in fact you have left such a beautiful place and you're roaming here and there. Why? Why you want? You're roaming to see the Lord from your own eyes. So, is it not required to roam here and there to see the Lord? So, Piplayan Rishi says, no, that is not required. So, he says,
that you need to control your mind and senses instead of roaming here and there. स्वयं अपने मन को समाधि में स्थित करो, समाहित करो, कंट्रोल करो। और जब मन कंट्रोल हो जाएगा तो And when your mind will get controlled, then भगवान का दर्शन पालोगे। you will yourself मन को see कंट्रोल करने से स्वतः भगवान का दर्शन मिल जाएगा। क्यों? the Lord. Why? भगवान कहाँ नहीं है? सर्वत्र भगवान सब जगह पर है। Where is दूसरी Lord लाइन में not present? भगवान He is present everywhere. He is all pervading. सदा साक्षात इव स्थितम। भगवान अंदर बाहर यहाँ वहाँ सब So He is there internally and externally everywhere. He is all pervading. So no need to roam here and there, but you need to sit and meditate on one place. And by controlling your senses, and the God will manifest. सच्चिदानंद विग्रह। क्यों? क्योंकि मन के अधिष्ठाता कौन है? So बहुत अच्छी बात है। who is the presiding deity of the heart? भगवान वासुदेव है। That is Lord Vasudev. वासुदेव एक तो मन के अधिष्ठाता है। So He is the presiding deity of the heart. It will become easier for us if we meditate on Him. And if you want to see the Lord from your eyes, so do you understand how your eyes were created? The eyes are created by the 5 elements, but the Lord you want to see is spiritual, created of Satchit Anand. बहुत सुंदर सैद्धांतिक प्रसंग है, कभी इस पर चर्चा होनी चाहिए। So we cannot see the transcendental spiritual Lord through our material eyes. वो वासुदेव, वो सच्चिदानंद विग्रह परमात्मा, वो भगवान नितांतम शोधिते चित्ते। यदि अपना चित्त, अपना मन शोधित पवित्र कर लोगे, शुद्ध So if we purify our heart, then He will manifest in your own heart. न च अन्यत, फिर अंत में और दृढ़ कहते, और कहीं जगह प्रकट नहीं होंगे। He won't manifest anywhere else. The Lord will manifest in your own heart. You don't need to roam here and there. People residing in America will be very much satisfied and happy that this is what we desired. As we can't be able to go to India, and Prabhuji is saying that you don't need to roam. नितांतम शोधिते चित्ते स्फुरति येष न चान्यतः। यदि अपना चित्त शुद्ध होगा, नितांत माने पूर्ण रूप से शोधिते, शुद्ध, our heart is fully purified, then the Lord, the transcendental Lord, will manifest in our own heart, and we will be able to see Him. Anywhere else, we won't be able to see Him. And further, he adds, अंतराभावात् सुसिद्ध्यति चेतसा खलु यत् साक्षात् चक्षुषा दर्शनम हरे। नेत्रों द्वारा श्री भगवान का दर्शन भी वास्तव में चित्त से ही होता है। So, even when we see the Lord through our eyes, that also is done through our heart. When we see that, when we say that we have seen the Lord with our own eyes, but then
Who has seen the eyes? The heart has seen the Lord, not our eyes. अभावात सुसिद्ध्यसि अंतरा भावात सिद्ध्यसि। क्योंकि जब हम आंखों से भगवान को देखते हैं So when तो उनमें we मन का see the अभिनिवेश Lord होता है, मन का through our सन्निवेश होता eyes, है। मन की the वृत्ति vision जब is नेत्र में आती है through तब our दर्शन heart होता है। by ये जो चक्षु its दर्शन है, support. आंखों का जो दर्शन है, वो हमारे चित्त के दर्शन का ही एक हिस्सा है। So it's the माने मन में जो manifested हम form भगवान that को we देखते हैं see in उसका our एक छोटा सा पार्ट है आंखों से eyes भगवान को देखना। is a और small दूसरे part शब्दों में of what आंखों से we are जब हम seeing भगवान को देख रहे through हैं our heart. तो वो मन ही तो देख रहा है। और एक बात, मन की वृत्ति ही आंखों में आती है जिससे वो हम भगवान को देखते हैं। तो फिर मन में ही भगवान क्यों ना देखें? So when we are seeing it as a part of the vision that we see in our heart, then why should not we see Him in our heart? That will provide us more happiness, bliss, and तो मानो satisfaction. यहाँ तर्क किया जाए कि मन में भगवान का दर्शन करे उससे ज्यादा सुख So, आंखों if the question arises that तब इसका उत्तर पिपलाइन ऋषि देते हैं, the satisfaction will be more if we see Him through our eyes, मन सुखे that is अंतर्भाव being answered by the sage सर्वेंद्रिय Piplayan सुखम स्वतः। in the shloka. कितना बड़ा सिद्धांत। पिपलाइन ऋषि कहते हैं कि गोप कुमार, He says to मन Gopkumar यदि सुखी हो गया ना, that if आपका your एक heart मन यदि सुखी हो गया तो is सारी इंद्रियां अपने satisfied आप सुखी हो जाएगी। or blissful, then मन सुखे all your अंतर्भाव, senses will be मन सुखी हो गया, मन सुखी automatically हो गया तो सर्वेंद्रिया satisfied सुख स्वतः, and तो in सभी bliss इंद्रियां बिना कुछ किए, without बिना भागदौड़ किए, बिना making मेहनत किए any स्वतः effort अपने on आप its own. सर्वेंद्रिय सुखी। That is लेकिन Sarvendriya Sukhi. लेकिन मन सुखी नहीं है But और if आंखों को the कितना भी सुखी कर mind लो or heart is आपको not कोई सुख नहीं satisfied, मिलेगा। then even एक if your मन सुखी eyes तो सारी इंद्रियां सुखी, are happy, लेकिन किसी एक इंद्रियों you को सुखी won't be करने का happy प्रयास or करोगे वो इंद्रियां भी satisfied अपूर्ण है, वो भी पूरा सुख ले नहीं पाएगी, मन because भी सुखी नहीं the होगा, eyes or the दूसरी senses इंद्रियों are का भी इंद्रिया incomplete, सुखी नहीं so होगी। they won't be able to completely इसलिए enjoy. तद वृत्ति स्वपि वाक चक्षु श्रुत्यादि इंद्रिय वृत्तयः। वाक चक्षु कर्ण ये सारी जो इंद्रियां है So all these बिना मन senses के like निष्फल speech होती and है। eyes without heart are useless or insignificant. ये हमारी जितनी भी इंद्रियां है उस इंद्रियों में मन का अभिनिवेश न हो तो वो If विफल हो जाती है। we don't have our heart मान लो यदि कोई in ऐसा कहे our कि senses, इंद्रियां अपने then अपने विषयों they को are ग्रहण करती हैं, insignificant. इंद्रियां अपने अपने विषय, आंख दृश्य को ग्रहण करती हैं, कान So श्रवण को ग्रहण करता eyes है see, ना, जीवा टच ears को ग्रहण listen, करती है, tongue ये tastes, ये skin हमारी त्वचा स्पर्श feels को ग्रहण the करती है। touch. बहुत सुंदर बात, अद्भुत। Very वो कहते beautifully हैं described here. कि मनोवृत्ति बिना, मन की वृत्ति के बिना सर्वेंद्रियाणाम वृत्ति अफला निष्फला, मन के बिना सभी So इंद्रियों के कार्य without निष्फल हो the जाते हैं। heart, whatever ये सब work छोड़ो, ये we सब समझ do में शायद ना आए। is कोमा जैसी nishphala बात है। or सुनो ना, fruitless. बंदा कोमा में चला गया, So अब you इस might पर have चर्चा हो heard जाती है, about ये तो a सिद्धांत है। person who goes into the कोमा का coma. मतलब क्या होता है? So भाई what हमारे does फलाने it दादाजी कोमा में implies? चले गए, वो आदमी 6 महीने तक कोमा में रहा, That somebody ये was in coma for 1 6 साल तक months. कोमा में रहा। इस पर थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। So let's कोमा में क्या होता है? focus on कोमा that. में आंख स्वस्थ होती है, ध्यान से So what सुनिए, happens during the आंख coma स्वस्थ is होती that है, कान भी स्वस्थ होता है, हाथ पांव eyes, सब ears, कुछ स्वस्थ होता hand, है। and eyes, तो फिर everything कोमा में प्रॉब्लम क्या is है? वो in बंदा working चलता condition. उठता बैठता है क्यों But नहीं? that person क्योंकि is उसमें unable to उसका perform मन काम any नहीं
activity. Why? Because his mind, his heart कि is कोमा not की जो working. अवस्था है उसमें व्यक्ति हट्टा कट्टा होता है, आंख कान नाक The सब कुछ person काम करता might है be healthy लेकिन मन काम नहीं and in करता। working condition, सो but मन काम नहीं still करने he से is not doing anything सारी because इंद्रियां जो है his mind विफल हो जाती है, is अपंग not हो working. जाती है। His heart is वही not यहाँ पर working. कहा जा रहा है। चलो कोमा भी आपको दूर पड़ेगा, आप अपने जीवन का ही देख लीजिए। सोना क्या है, So, कोमा छोड़ो, सोना let's देखो। give another example of sleeping. आदमी What सो is जाता है sleeping? तो जब आदमी सो जाता है So when तो the बड़ा person वहां सा लगता है, sleeps, he कुछ नहीं कर रहा appears है। to be dead. क्या उसके हाथ He काम is नहीं not करते? doing हाथ तो anything. बिल्कुल तंदुरुस्त है, He is healthy. आंखें भी अच्छी हैं, कान भी His अच्छे हैं, सब hands, कुछ अच्छा है, eyes, ear, लेकिन everything मन is सो गया capable. है। But तो his मन सो heart is गया sleeping. तो सारी इंद्रियां होते हुए भी उनकी वृत्ति काम नहीं करेगी। So although इसका all the मतलब senses are present सभी there, इंद्रियों but में still मन काम कर रहा है, no sense will यदि मन work नहीं है तो सारी on इंद्रियां its जीरो है। own without the जैसे heart. हम सो जाते हैं, जैसे कोई कोमा में चला जाता है, और उसको दूसरे शब्द में यदि In मन में other कोई चीज words, आ गई if तो सारी इंद्रियों में अपने there आप is चीज आ something in जाएगी। our heart, then कई बार नहीं होता है, that will be किसी there के in पास all बहुत our कुछ senses. समृद्धि संपत्ति Sometimes खान people पान have सब so कुछ होने much पर भी affluence, दुखी रहता है। but still इंद्रियों के they पास सब feel कुछ है, आंखों के लिए unhappy देखने or की चीज है, distressed खाने के लिए भोजन है, सब कुछ है, लेकिन मन संतुष्ट नहीं है। because the mind और कुछ or लोग the heart भक्त की is not रोटी नसीब नहीं होती, satisfied. And कब if कब कहाँ कैसे some मिलेगा वो people भी who नहीं पता don't होता, even have लेकिन मन आनंद two लेता meals a है day, तो बाहर but से still भाव their होते हुए heart भी वहां is से filled उन्हें with आनंद joy, मिलता है। so they are तो यहाँ पर satisfied. पिपलायन ऋषि कहते हैं So कि here मनोवृत्ति Piplayan sage सर्वेन्द्रियाणाम says, वृत्तयो अफला कृताप्यः कृत्येव स्याद् मन्य उपलब्धित। इसलिए सिद्धांत है कि so चक्षु the इंद्रिय द्वारा philosophy is that भगवान का दर्शन असंभव है। to see the Lord's क्यों? form is क्योंकि impossible भगवान through चिन्मय eyes है because और the हमारी Lord इंद्रियां is जो है transcendental भौतिक and है। our eyes are सो भौतिक material, इंद्रियों से हम चिन्मयी and भगवान through को our नहीं देख material सकते। eyes we cannot see the अच्छा, तो transcendental यहाँ पर spiritual महाराज गोप form कुमार of the प्रश्न Lord. करें So if कि ध्रुव Gop महाराज Kumar ने तो अपनी asks the आंखों से question भगवान को देखा, that how एक Dhruv बुद्धिमान Maharaj was बुद्धिमान आदमी तो able प्रश्न करेंगे ना, to see the ध्रुव Lord, ने तो अपनी आंखों से an भगवान को intelligent देखा। person will अच्छा, ask a प्रहलाद ने question. क्या भगवान को मन में देखा था? नहीं, So प्रहलाद ने अपनी आंखों did से भगवान Prahlad नरसिम्हा देव को saw देखा। Lord Narsimhadev वैसे through इतने his ऐसे अनेक heart? भक्तों ने अपनी No, आंखों से through his भगवान को eyes. देखा। There are numerous तब examples of पिपलायन ऋषि इसका उत्तर देते हैं the कि भाई devotees बात seeing सत्य है the vision कि or कदाचित form of the Lord through their कभी eyes. कभी भक्ति वात्सल्याद And Piplan Muni भगवान को अपने answers, भक्त के प्रति बड़ी करुणा sometimes the वत्सलता Lord का गुण प्रकट हो becomes जाता है। very तो merciful कदाचित ये कहते हैं and कभी कभी भक्त has वात्सल्याद parental भक्त वत्सलता के affection कारण towards कश्चिचित his दृश्यताम devotee. दृशो, So आंखों से कुछ that भक्त time, भगवान को देख सकते हैं, and लेकिन those कुछ भक्त devotees can भगवान को देख see सकते हैं ये the Lord भगवान की through भक्त their eyes. वात्सलता और कुछ नहीं। So इसका they are मतलब not ये able है to कि see भगवान बाउंडेड the नहीं है, form of the Lord भगवान बंधे हुए नहीं है, by their भगवान own स्वयं will चाहे or तो effort, हमारी but भौतिक इंद्रियों by में भी the अपना दर्शन mercy दे of the सकते हैं। Lord. अगले श्लोक में सत्यव्रत मुनि कहेंगे अनंत विष्णु, वहां अनंत का अर्थ यही है। लेकिन भगवान चाहे तो भक्त को भौतिक इंद्रियों से भी दिखाई देते हैं। So the Lord क्वचित ये is कुछ कुछ केस में independent ऐसा होता है and कि He can कदाचित भक्त show वात्सल्याद His या form कश्चित दृश्यताम दृशो, to भगवान the अपने pure भक्तों को devotee आंखों से दिखाई due देते to हैं His parental affection और ज्ञान towards them. दृष्टेव तज्जाम अभिमान परम दृशो, लेकिन उस अवस्था में भी But वो भक्त जो है even in that अपने मन की situation, वृत्ति से ही भगवान को देखता है still he is seeing the Lord और through उनको his केवल heart. अभिमान होता है कि मैंने आंखों
and they might get pride that they have seen the Lord through their eyes, although they have seen the Lord through the Jnana Chakshu or through the heart. मान लो कोई कहे कि श्री भगवान अपनी कारुण्य शक्ति के द्वारा So if someone says that भगवान करुणा करे due to the mercy of the तो आंख Lord, दृष्टि से भी दूसरों को दर्शन दे सकते हैं, He can give तो the कहते हैं तस्य कारुण्य vision शक्तिया or He can manifest वागीशात्ववि बहिर्देशो। जैसे भगवान अपनी करुणा से externally. कभी कभी बाहर से दर्शन देते हैं तो वो अंदर से भी दर्शन देते हैं, So He does that लेकिन internally जब as well. भगवान का दर्शन बाहर से हो या अंदर से हो, वो आनंद का एहसास जो है ना, Despite वो He तो मन being ही करता है। manifested internally or मन को अपने externally, पूरे the शरीर में bliss or ecstasy सुख का will be एहसास the कहाँ होता है? same. आनंद का एहसास एक और मात्र एक मन में होता है। And that यदि वो ecstasy आंखों से भगवान is देख भी रहे felt तो वो in the फीलिंग्स कहाँ heart, होगी? मन में not in होगी, any other आंखों में नहीं sense. होगी। ये कथा आप कानों से सुन रहे हैं, लेकिन आनंद कान को So, नहीं मन को आ रहा so है। we are listening this katha through our तो इन ears, सब but इंद्रियों के द्वारा our आखिर सुख और दुख तो ears मन are ही not में होता enjoying, है। but our heart is तो enjoying सीधे the मन में katha. ही यदि भगवान का दर्शन हो जाए तो So, सारी इंद्रियों को अपने आप भगवान का दर्शन हो जाएगा। if we see the इसलिए Lord in our सत्यव्रत heart, मुनि then इन all our ऐसी senses बातों will को be ध्यान रखते हुए automatically कहते हैं satisfied. कि And मुझे keeping this मन में मेरे philosophy in दर्शन mind, दीजिए, Satyavrat Muni is asking प्रभु में मेरे that मन में आप please दर्शन manifest दीजिए। in my heart. भक्तों, इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण ने कितना जोर दिया, मन मना भव मद भक्तो So in मच्चित्त Bhagavad समाधातो Gita, Krishna मच्चित्तम emphasizes प्रसादस्व मुझ man में mana मन man लगाओ, bhat मुझ में मन bhakto, लगाओ। that please एक बात ध्यान focus, से सुनिए, concentrate your heart हम लोग onto भक्ति me. के जितने भी कार्य करते, इवन हम वृंदावन जाते हैं, क्यों? So whatever आंखों से भगवान deeds को we देखने के लिए do नहीं, इन भौतिक to चीजों से हम progress in भगवान को devotional देखते हैं। service, हम ब्रज में जाते हैं, दर्शन करते हैं, we मंदिरों में go to जाते the हैं, क्यों? holy places in अपने Braja हृदय को शुद्ध करने के लिए। to सबसे सरल purify विधि our है। heart. मैं That is संडे the मंदिर में process. दर्शन करके आ गई, भगवान को देख के क्या देखा? भगवान को, भगवान चिन्मय I है, went आंखें to the खोली, temple on क्या देखा? Sunday प्रोसेस समझिएगा। हम और and आप भगवान को क्यों देखते हैं? did चित्त the शुद्ध darshan करने or के लिए, saw his मन form. शुद्ध करने के So लिए। why we are doing क्योंकि जब that? तक मन शुद्ध नहीं We are होगा तो doing that भगवान to मन में purify आएंगे ही our नहीं। heart. And until our heart is तो purified, हम the यात्रा Lord will करते हैं, never गंगा manifest नहाते, यमुना in our नहाते, यहाँ heart. जाते वहां जाते, ये सब So प्रयास क्यों हो we रहा है? take the dip in the holy rivers मन and को we go to शुद्ध the holy करने के places. लिए, क्योंकि Why we मन put so शुद्ध much होगा effort तो ईश्वर का दर्शन to हमारे purify हृदय में our होगा। heart वो and to मन में manifest रहेंगे, Lord मन में in होंगे। our heart? हम जब हरिनाम जप करते हैं ना, तो ये सब When ध्यान में we होना चाहिए chant कि ये करने का the हमारा उद्देश्य Harinam, क्या है? then मन we शुद्ध हो, should मन भगवान में always लगे। keep this in क्योंकि mind गीता में that कृष्ण ने we are केवल chanting और to केवल मन purify को our बुलाया, heart. याद रखिए। Because कृष्ण in के Bhagavad पास सब Gita, कुछ है, Krishna has asked धन संपत्ति only our सुख heart. ऐश्वर्य He सब कुछ has है। उस बंदे everything, के पास एक चीज नहीं है, wealth, और वो है मन। वो इसलिए bravery, तो मांग रहे हैं courage, कि अपना मन everything. मुझे दीजिए, But मन he मुझे doesn't दीजिए। has only तो one अभी thing, कृष्ण that के is पास the heart. धन नहीं है, बोले है, And he लेकिन वो राधा रानी लेकर चली गई है। he is बिना मन asking वाले हो, us बिना मन our वाले हो heart. गए हैं। Because Radharani has इसलिए कृष्ण को already मन चाहिए, stolen his heart. मन देना है। So that's और why और we need और to हमारे give जीवन में एक घटना तो heart न to चाहते the हुए भी Lord. घटेगी। कौन कौन चाहता है कि हमारी मृत्यु हो जाए? So लेकिन nobody हम सबके जीवन desires में to मौत die, आएगी, मृत्यु but आएगी। that अब मुझे is the बताइए eternal कि जब truth. जीवन में मृत्यु We आएगी, all तो will have मृत्यु to के face समय death क्या हमारी आंखें someday. काम करेगी? So at that time, जीवन भर will भगवान को our कहा आंखों eyes से दर्शन work? दे दीजिए, अरे मृत्यु से 20 साल पहले ही मोती आ जाएगा। आंख तो कब के Even चश्मे before we लगा के बैठे हैं। die, देखो जवानी में चश्मे आ गए हैं, we will और have मृत्यु के समय cataract, तो or आंखें we all आंखें have, बंद करके most of us भगवान को have कहाँ specs. देखोगे? So how we are न going न to तो आंखें see बोलने का the काम करेगी, Lord? न कान सुनने का काम करेंगे।
The ears won't be able to listen, the tongue won't be able to speak. All our senses will stop working, and that time only one thing will be working, that will be our heart. And if we practice to work with our heart, then at the time of death we will be prepared. We see the form of the Lord through our eyes. So we are seeing that only to purify our heart, so that we can have the Lord manifested in our heart. So when we have practiced, then only it will be stamped that during the time of our death, we will be able to manifest the Lord in our heart. So, whatever we are doing through our hands or eyes is doing for the heart. We need to always remember that. मानो 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 अब जैसे ही सत्यव्रत मुनि ने कहा कि मन में मुझे आपका दर्शन हो, तो भगवान तुरंत सत्यव्रत मुनि के मन में प्रकट हो गए If Satyavrat और वो Muni छवि says that सत्यव्रत मुनि के you मन में आ गई। manifest in my heart अब and the जब मन Lord में आ गई appears in his तब heart, सत्यव्रत मुनि और एक चीज मांगते then हैं। after वो he मांगते हैं manifests in 36 श्लोक Satyavrat में। Muni's heart, he asks one more 36 thing. श्लोक का हम सब आस्वादन करें। In the sixth verse of Damodar Ashtakam, नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानु कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानु गृहाणेश मामज्ञ मे दक्षिदृश्य। जब सत्यव्रत मुनि को मन में भगवान का दर्शन हो गया, चौथे और when Satyavrat Muni was able to see the manifested form of the Lord through verse 4 and 5, अब वो प्रेम बढ़ गया, अब वो so कामना बढ़ गई। the intensity अब and his सत्यव्रत मुनि desire गोपियों की तरह कहते हैं increases कि हे manifold, कृष्ण, and जब मन में आ he ही गए हो says तो फिर like आंखों के Gopi सामने that आने में क्या हर्ज है। when you're already जैसे माँ manifested, देवकी के you मन have में आ already गए तो फिर manifested in आंखों my के heart, सामने आ गए, then द्रौपदी why के मन में don't you आए तो फिर appear आंखों in के front सामने of आ गए, my eyes जब as जीवन well? भर मन में स्मरण किए तो नरसिंह देव के रूप में आ गए। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं चौथे पांचवें श्लोक में, जब मन में आ गए तो कहते हैं कि प्रभु अब आंखों के सामने प्रकट हो जाइए। इसका अर्थ क्या है? So, what हमें does it mean आंखों के सामने that भगवान को प्रकट नहीं करना है। we हमारा don't पहला want उद्देश्य है पहले to मन में प्रकट see हो। the Lord एक बार मन in में हो our गए तो फिर eyes, अगला स्टेप but सीधा आंखों के सामने। step by step, सो firstly प्रोसेस through ये our है, पहले heart आंखों के and सामने then भगवान प्रकट हो। through our eyes. So, that is the तो process. इस श्लोक के अंत में सत्यव्रत So, मुनि in अपनी the end इच्छा of व्यक्त कर this रहे हैं और वो इच्छा shloka क्या है? or verse, अंतिम शब्द, Satyavrat लास्ट वाला Muni शब्द is देखिए, दृश्य। asking a और दृश्य के आगे benediction or वाला शब्द क्या है? desire, अक्ष। and the last word, गृहाणेश मामज्ञ मेधक्षी दृश्य। तो बाकी सबको छोड़ के मेध Drishya. अक्षी, अक्षी माने आंख, Med दृश्य Akshi माने Drishya. प्रकट हो So, जाइए। Med Akshi means तो eyes, इस छठे and श्लोक Drishya में means to सत्यव्रत present. मुनि भगवान को अपने आंखों के सामने प्रकट होने की प्रार्थना कर So, रहे हैं Satyavrat Muni is कि महाराज मन में praying आ गए तो अक्षी दृश्य आंखों के to सामने प्रकट हो present जाइए। himself, to present the Lord in front of his eyes, अब as he आंखों is के सामने already प्रकट हो जाइए। manifested क्यों? in his heart. तब So, शुरू करते हैं why? नमो देव। सत्यव्रत So, he मुनि says, उत्कंठा से अन्वय करना भूल रहे हैं
So he had swapped from Dev Namo. Instead, he's saying Namo Dev because he is so much engrossed in the mood of Lord, love for the Lord. So, Dev means divine form. So I have seen it in my heart. So, but now I want to see it, you through my eyes as well. Why? Because you are divine and transcendental, and your beauty is beyond comparison in this material world. You are beyond the beauty of this material world. Even if someone is very beautiful and well dressed, but still after 4 5 years he will not be that fresh. But the Lord is always fresh, filled with fragrance. So the second word is Damodar. So if the Lord says that you're asking for such a huge benediction, then why should I manifest in front of your eyes? I am the Supreme Lord. So for that, Satyavrat Muni answers that you are Damodar. So here, according to Sanatan Goswami, you are Bhaktavatsal. Bhaktavatsal means the Lord who has parental affection, like a newborn calf is cared and loved by the cow. So Damodar here signifies Bhaktavatsal or parental affection towards the devotee. So the first is Dev, then second Damodar, then he is addressed as Anant. So you should present in front of my eyes because you are Ananta. That is one who has no end. And the person who can remove all our misery. Sripad Sanatan Goswami gives a beautiful meaning of Anant, that who can make the huge big and vice versa. So for example, according to our karma, we have sinned and we have so many obstacles and troubles. But if we have the mercy of Lord, that can be come as small as mustard seeds. And by just offering a small lamp, is it doing too much of work or effort? Just to offer the lamp to the Lord, but by just simply doing that, He is so merciful that He gives us Vaikuntha. That is why, due to his this quality, he is addressed as Ananta. So you should present in front of my eyes because you are divine, Dev. Second, because you have parental affection towards us as your Damodar, and because you are Anant.
So, if the Lord says that you're sitting in Peru or US and I live in Vrindavan, why should or how I will come to US or Canada? Then he says Vishnu. So this Vishnu is not the carnation of the Lord, but it's his quality which is referred here. So Vishnu means all pervading because he is present everywhere. As Shivji says that you are present everywhere in the similar manner or same quantity. So you can manifest everywhere and anywhere. So all these address that Satyavrat Mani is using is to ask or pray Krishna to present himself in his eyes. So, so if Krishna says that I manifested in your heart because of your prayer, now that you've got that opportunity, you want more. And if the Lord says that your eyes are of material existence, and how you will be able to see my transcendental form, then Satyavrat Muni answers that by the word Prasidh Prabhu. So, Prabhu here means that he who can make possible and impossible both happen. That is why he is Prabhu. Although I understand that it's impossible to see your transcendental form through our material eyes, but because you're so capable of making impossible happen, you can do that. I have firm faith in that. And I am immersed in the ocean of misery. And if Krishna says that, what will I do if I manifest? So Satyavrat Muni says that I am in the ocean of the misery and I'm surrounded by distress and I'm fully immersed in this sadness and distress. And if Krishna says that, what shall I do? So he says that, please bless me with your mercy through your eyes. ये शब्दों को कैसे तोड़ना जोड़ना है थोड़ा सीख लीजिए, क्योंकि बतानु का कोई अर्थ नहीं होता। इसमें दो शब्द है, बत, बत अलग है और अनुग्रह, ये But and anu means anugraha. So that is the bifurcation of the word. So for singing, we simply break them, but we should understand their meaning. So, but means feeling sorry for ourselves, and anu means that I'm suffering in this material world. So please be merciful. Anu means anugrah or mercy.
So the next he says Anugrahena Ish. जो है ना उसमें ईश को निकाल दीजिए, वो अलग हो जाएगा। तो कितने So we लोग can अलग break हुए? this देव, into Ish. So the दामोदर, first Dev, अनंत, Damodar, विष्णु, Anant, Vishnu, और Prabhu ईश। and Ish. तो गृहाणेश मामेज्ञ मेधक्ष दृश्य माम अज्ञ, हे प्रभु मैं अज्ञ हूँ, So Mam Agya means अज्ञानी हूँ, I am आप मेरे ignorant, सामने प्रकट होइए, मेरे but आंखों के please सामने प्रकट manifest in front of my eyes. बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मूल रूप से आज So there are पूर्णाहुति quite a आज few हुई है। things मैं आपको ये बताना चाहता हूँ but कि यहाँ I पर want to सत्यव्रत discuss मुनि that इस एक श्लोक में in भगवान this के 6 नाम ले shlok रहे हैं। or verse, ऐसा नहीं Satyavrat Muni कि is भगवान addressing अनेकों जगह पर है, the Lord किसी by एक 6 श्लोक में names भगवान के 6 नाम। in one verse. सत्यव्रत मुनि एक सिद्धांत देना चाहते हैं। So he is giving us one इस philosophy. श्लोक के अंत में क्या कहा? अक्षी What दृश्य, is that? आंखों के सामने दृश्य, दृश्यमान हो जाओ, प्रकट हो जाओ। That और आंखों के please सामने present in प्रकट front होने of के लिए our इस eyes एक श्लोक में भगवान and के 6 नाम, समझ में आ रहे हैं ना? to देव, दामोदर, present अनंत, विष्णु, him in प्रभु front और of our ईश। eyes. He is addressing by इससे 6 सत्यव्रत names. मुनि हमें आपको ये समझाना चाहते हैं So by कि that अक्षी he दृश्य is आंखों के सामने प्रभु को यदि प्रगटाना है presenting us तो the मेरे से fact यहाँ that 6 नाम लिए, if we वैसे want to आपको manifest भगवान the के Lord, निरंतर नाम लेने then होंगे। we बिना need to भगवान का नाम लिए constantly भगवान chant प्रकट नहीं हो and सकते। remember the कितना holy बड़ा names of सिद्धांत the है। Lord to हर एक manifest नाम लेना him होगा, in front of our बिना नाम eyes. के भगवान नहीं मिलेंगे। सभी So साधनों का without सार एक मंत्र chanting हरि नाम। the holy names, we सो won't be इतने able सारे हरि to के see नाम the Lord. लेकर That हमें कहते is हैं the अक्षी conclusion दृश्य आंखों के सामने प्रकट हो जाइए। of this Ashtakam. ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मानो भगवान श्री कृष्ण कहे, So if the Lord सत्यव्रत, says हे that, सत्यव्रत, O Satyavrat मैं Muni, तो तेरे आंखों के सामने आना चाहता हूँ, I want to come in लेकिन मेरी माँ front of यशोदा your ने eyes, मुझे बांध दिया है। but my mother अब मैं Yashoda खुद has बंधा हुआ हूँ, tied मैं me. कैसे चलकर आ I सकता हूँ? myself तुम अमेरिका बुला रहे हो tied, और and मुझे you're सिडनी बुला रहे calling हो। me to US माँ ने or बांधा है Australia. और बंधा हुआ आदमी कैसे चल सकता है? खुद बंधे How हुए हैं, can दूसरे को a कैसे person who बंधन is से मुक्त कर सकता है? tied can इस liberate प्रकार से others? भगवान ने कहा। तब दामोदर अष्टकम के 7वें श्लोक में कहते हैं, Then प्रभु Satyavrat मंदिर Muni बने answers आपने नल को in the निर्मल पानी से verses नहीं चढ़ा 7 दिया। that तो you उसमें liberated 7वें श्लोक का the sons में of सत्यव्रत मुनि 2 श्लोक Kuber बाकी, आइए छोटी सी सूचना सुन लेते हैं और फिर हम by, दामोदर अष्टकम के although you were 2 tied श्लोकों at को that time समझने का too. प्रयास करेंगे। So let's take a small break and continue further. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ही सुंदर इस षष्ठम श्लोक के अंतर्गत प्रभु जी ने रसपान कराया हमें, जहाँ पर विशेष सर्वप्रथम तो हमने श्रवण किया कि किस प्रकार ये जो हम प्रतिदिन दीपदान कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू परफॉर्मिंग अश्वमेध यज्ञ। तो बहुत ही सारी वैसे ग्लोरीज है इस दीपदान की महिमा की, जस्ट एज प्रभु जी मेंशन दैट। तो और साथ ही साथ यहाँ पर इस दामोदर के श्लोक में प्रभु जी ने कितनी सुंदर चीजें बताई, जहाँ पर कि हम भगवान के दर्शन करने का अर्थ है कि हमारे चित्त को शुद्धिकरण करना, और भगवान को वास्तव में हमसे क्या चाहिए, वो ये है कि हमारा मन। So the purpose of visiting the pilgrimage and the purpose of visiting again and again Hare Katha is to only purify our mind so that we can offer our mind to Krishna. So thank you very much, Fuji. And just because today is the Purnahuti day, so we'll have first our Goshala Darshan and then some more सूचना informations. तो आज हमारे श्री राधा गोविंद गौशाला के हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, और हमारे पुनः हमारे ये जो यजमान परिवार हैं जिन्होंने सहयोग किया है सुंदर, जिसके फलस्वरूप हम यहाँ पर इस अद्भुत दामोदर लीला की कथा को, इस दामोदर अष्टकम की कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। तो हमारे जो सहयोगी परिवार है, इन 5 वैष्णव परिवार के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि वास्तव में आपने जो सहयोग किया है, जिसके फलस्वरूप हम इतनी अद्भुत भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। साथ ही साथ इस पवित्र कार्तिक मास के अंतर्गत हम ऐसी भगवान की प्रिय गौ माता की सेवा भी कर पा रहे हैं। So, again and again, thank you very much to our beloved यजमान families. तो सबका धन्यवाद। और कार्तिक मास के अंतर्गत हम यहाँ पर इस सेवा में जुड़ सकते हैं। जस्ट लाइक बहुत ही अद्भुत महिमा है कार्तिक महीने की, और इसी महिमा के अंतर्गत हम यहाँ पर इस कार्तिक में भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था है जहाँ पर आप अपनी सेवा द्वारा सहयोग कर सकते हैं हमारे श्री राधा गोविंद गौशाला में। कार्तिक की महिमा इतनी अद्भुत है कि छोटी सी भी सेवा हम परफॉर्म करते हैं तो इसका सबसे अधिक फल मिलता है। जैसे कि प्रभु जी ने कथा के प्रारंभ में बताया था कि किस प्रकार हमारे भजन में जो सेवा में कमियां रह जाती हैं, तो उस हम कार्तिक में परफॉर्म करते हैं तो वो सारी कमियां दूर हो जाती है। तो इसी प्रकार ये बोनस मंथ हमें जो मिला है सेवा के लिए, उसका हमें पूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हम जो भी हमने साल भर भजन किया है उसमें जो भी त्रुटि कमी रहती है, भगवान तो वैसे सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, परंतु फिर भी हमें एक अवसर मिल रहा है कि उस त्रुटियों को सुधार सके, उसको ओवरकम कर सके और उसको परफेक्ट कर सके। तो here we have wonderful opportunity where we can serve the Vaishnavas, where we can serve Go Matas, so that we can perfect our that went year, the year which has went, और जिसमें हमें थोड़ी बहुत त्रुटियां रही है हमारे भजन साधन में। तो आप सबसे निवेदन है कि इस कार्तिक मास में आप हमारे साथ में इस सेवा में जुड़िए, जिससे कि हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो if you want to be a part, or if you want to contribute here, प्लीज हमें अप्रोच कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर which is 7567545555, और इस विषय में और अधिक सूचना भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। And there's one more number which is +12012150913. So we hope you will approach us in this Kartik month for this wonderful seva. और साथ ही साथ क्योंकि ये कार्तिक महोत्सव अभी शुरू ही हुआ है, इसी के अंतर्गत अन्य एक और भागवत कथा जो कि हम आने वाले दिनों श्रवण करने वाले हैं। तो इस यहाँ पर हम जो हमने अभी दामोदर अष्टकम की कथा श्रवण की है, तो वहां से वृंदावन धाम से हम प्रभु जी के मुखारविंद से इस दामोदर लीला के विषय श्रवण करेंगे। सो देयर इज टू डिफरेंट थिंग। ये भी एक अद्भुत रहस्य है जो कि प्रभु जी वहां पर उद्घाटित करेंगे इनको श्री धाम वृंदावन से, कि दामोदर लीला और दामोदर अष्टकम में जो डिफरेंशिएशन है वो हमें पता चलेगा। तो आप सबसे निवेदन है बने रहिएगा इस दौरान, और 2 से 8 नवंबर यह कार्यक्रम चलेगा, ये भागवत सप्ताह चलेगी। तो समय में थोड़ा बदलाव जरूर है, यहाँ पर आप उसे नोट कर सकते हैं, विच इज हमारे भारतवासी भक्तों के लिए ये शाम को 7 बजे शुरू होगा और 10 बजे एंड होगा। और जो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से स्थित डिवोटीज हैं वो जो टाइम जोन फॉलो करते हैं उनके लिए 12:30 से 3:30 बजे, और यूके के डिवोटी के लिए 1:30 बजे दोपहर से लेकर इवनिंग शाम को 5 बजे 4:30 बजे तक। एंड देन यूएसए के भक्तों के लिए सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। तो आप सबसे निवेदन है जिस प्रकार आप हमारे साथ में बने आए हैं, इसी प्रकार आने वाले दिनों में भी इस कार्तिक की महिमा का आप लाभ ले सकते हैं। कार्तिक के इस लीला कथा की श्रवण करके अपने जीवन को और भी अधिक धन्य कर सकते हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप प्लीज बने रहिएगा और अपने आप को इस प्रकार शेड्यूल कीजिएगा जिससे कि आप ये ब्रज धाम में एक भी चीजें मिस न करें। और साथ ही साथ इसी के साथ throughout the day we'll travel to different places in Shri Dham Vrindavan, from where there also we'll go live प्रभु जी की कथा के द्वारा, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो इसलिए आप सब से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर्वप्रथम, जिससे कि आप ये सूचना, ये लाइव टेलीकास्ट हमारे साथ में देख सकें। और साथ ही साथ भागवत कथा का पुनाहुति का दिन है, तो बहुत सारे भक्तों की इच्छा है कि हम अपना भाव को प्रकट करें। तो यस, आफ्टर सम टाइम यू विल हैव अ चांस टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। तो फिलहाल हम निवेदन करना चाहते हैं श्रीमान लाल गोविंद जी से कि ये विशेष कथा है श्रवण कराएं। हरे कृष्ण। कुबेरात्मजो बद्धमृत्यैव यद्वत्
त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। हे प्रभु, यदि आप ऐसा कहो, So Satyavrat Muni says in the 7th verse that if you say that you're already yourself tied to the mortar grinder, so how can I liberate you? So this, the two sons of Kuber, the the most affluent demigod. So in this verse, Satyavrat Muni आप पहली बार इसको मार्क करोगे, सुना तो बहुत बार होगा, uses कृष्ण का एक नाम है to बद्ध address मूर्ति। one word, Badhe क्या है? Murti, that you might have मूर्ति। read so many times, मूर्ति तो है, but लेकिन you कैसी haven't मूर्ति है? marked it बंधी yet. हुई मूर्ति। So Badhe Murti तो है means बद्ध the मूर्ति, deity who is माने है tied. बंधी हुई मूर्ति, है उखल के साथ बंधे हुए कृष्ण। So, oh कुबेर Lord, आत्मा जो who कुबेर के पुत्र is की tied by the rope, यतवत, जैसे आपने कुबेर के पुत्र को that as you मूर्छित हुआ liberated संसार के 84 लाख के बंधनों from से मुक्त कर दिया, the cycle of और 84 lakh of संसार species, के बंधनों से मुक्त ही and नहीं किया, not only you भक्ति liberated भाजो them, कृतो च, but भक्ति का भाजन you बना दिया, also भक्ति का gave पात्र बना दिया। them your pure माने devotional कुबेर service. के पुत्रों में क्या था? Although वो they नरक were का not रास्ता तय कर दिए थे qualified, प्रभु, लेकिन they आपकी अनंत were कृपा ने progressing उनको भक्ति to का go भाजन towards बना the दिया। hell, but 84 के by your चक्कर में mercy they got your उनको pure भक्ति devotional का दान कर service. दिया। कथा से आप सब परिचित हैं, मैं Oh, केवल एक दो you बातें might स्मरण be करा दूं। aware of the शिव जी ने pastime, देखा कि but कुबेर let के ये me दो पुत्र remind बड़े you गुणवान हैं, shortly that इसलिए शिव जी ने कुबेर के ये दोनों पुत्र Lord कुबेर और भगवती Shivji को अपना पर्सनल saw असिस्टेंट बना लिया। that these two sons of तो शिव जी का Kuber कुछ are काम करने very लगे, wise करने and लगे। intelligent, धीरे 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 समय बीता, so he उनका made अभिमान them बढ़ गया his कि भाई हम counsel or शिव जी assistant. के मंत्री हैं, शिव जी को मंत्रणा देते हैं, And और अभिमान आदमी से they क्या नहीं became करा, proud that we give अभिमान कुछ counsel भी करा सकता to है। Shivji himself. और इस अभिमान के चलते And धन due और to पद that के मद के कारण pride, and कुबेर के as दोनों पुत्र नर they कुबेर were बने गए, वो शिव जी के ही immersed कैलाश लोक में in एक दिन the शराब पीने pride लगे। of wealth इतनी शराब में चूर, नशे में चूर, and position, they started और किसी दो नृत्यानिनियों drinking को साथ में लेकर liquor उनके and साथ आलिंगन करते हुए, चुंबन आदि करते were हुए, ये embracing and करते हुए kissing गंगा में स्नान करने two लगे। dances and started ये पवित्र taking गंगा a में dip थे, in the holy river ये of उनके Ganga or कुबेर का Ganges. कोई वाटर पार्क नहीं था, This was not the water park of पवित्र गंगा में their जाकर father, शराब पीते हुए स्त्रियों के demigod साथ आदि Kuber, आदि और निर्वस्त्र स्नान करने लगे। बड़ा and अपराध they were इन दोनों naked, ने किया। which was और उसी समय उस मार्ग से नारद मुनि गुजर रहे very थे। bad नारद जी for को them. देखकर उन स्त्रियों को तो लज्जा आई, So when वो तो चली गई, Narad Muni लेकिन was ये passing दोनों through, नारद जी का अपराध करने लगे। and those women, when they saw कि Narad साथ में तुम चल Muni, नहीं they गई, यही left. मार्ग मिला था, But हमारी मजा बिगाड़ दी, हमारा आनंद काट these दिया, ये two वो बहुत कुछ कहने started लगे। abusing अब Narad इस Muni परिस्थिति
that why this he has came here and disturbed us. So, so there is a complete chapter of what Narad Muni is thinking in the Shrimad Bhagavatam. You can read sometime. And the thing, Narad Muni thinks that if somebody is affluent, then it definitely opens the window to self-destruction. But a poor person mostly will be humble or filled with humility as his efforts are to earn and live for and create an existence for himself. So Narad Muni, after thinking that, he says that you want to be naked, then why don't you become trees? And once they were cursed by Narad Muni, they realized their mistake and they bowed down at the lotus feet of Lord Narad of Sri Narad Muni. So Narad Muni said that you will be trees, as I've said, but you will be trees in the home of Nand Baba. And these two sons started to live as Arjuna trees in Nand Baba's home. So Arjuna tree root, if you mix in milk, it is it is very beneficial. I drank it yesterday. So these two were twins. That is why Yamla Arjun, because Yamla means twins and Arjuna trees. So when Yashoda Mai tied Krishna with a mortar and grinder, and all the gopis were pursuing Yashomati Mai to not to chastise Krishna, and then Yashomai said that "Oh, you always complain about him, and now when I'm chastising him, you are coming in his support. Nobody should come near Krishna today." And Krishna is crying for 2 hours being tied to the mortar and grinder, and then he sees these trees and he realizes that being tied for 2 3 hours, I am feeling so much distress, and these trees are standing here since thousands of years. So after seeing his own situation, he understands and realizes and has empathy for them. Although Krishna has seen these trees for so many years and times, but he never realized. But once he himself is tied, he realizes the situation of these trees. Similarly, in the Kevat Prasang of Ramayana, that after 4 5 rounds, that Ramji has to sit in the boat, he says, "I'm tired," and the Kevat says that you are tired of just 4 5 rounds, and we roam in 84 lakh species. So Krishna himself is tired, yet he wants to unbound these two trees. So there is one important philosophical point here
So sometimes we have ठीक से बोल this नहीं पाते हैं। ये situation हरि नाम जब कब in करोगे, our कितना mind करते that होंगे, कितना करते our होंगे, guru, स्थूल दृष्टि who से, is unable भौतिक दृष्टि to से even walk, कभी कभी how he will be विकरेल दिमाग में chanting. ऐसा विचार आ सकता है। Sometimes by corruption जितने of our हमारे mind, आचार्य हम जिसके we आश्रय get में this हैं, जिस गुरु के आश्रय में हैं, stupid वो तो हमारी idea तरह हमसे भी हैं। and we लेकिन एक बात consider स्मरण रहे that कि भगवान कृष्ण our खुद guru बंधन में is थे, also लेकिन not उस of a मस्त मणि stature. गुरु यमलार्जुन का बंधन छुड़वा दिया। सिद्धांत But ये है the कि philosophy here समर्थ is that व्यक्ति स्वयं even बंधन में होकर a भी दूसरों का person बंधन खोल सकता who है। is tied समर्थ but yet व्यक्ति, capable इसलिए कभी भी can अपने किसी व्यक्ति untie को अपनी छोटी the बुद्धि में आंकना नहीं bondage of चाहिए। others. So ये we तो should हल्का not फुल्का है, ये तो ऐसा है, तो वैसा है। अपनी छोटी बुद्धि में judge वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे, the book by its cover. कभी किसी को तोलना नहीं चाहिए। We should never हमने try to देखा गया है measure कि the कृष्ण बंधन devotee. में है, लेकिन उस So बंधन को उन्होंने मुक्त कर दिया। Krishna is himself tied, but yet he liberates उदाहरण के these तौर पर trees. For ये example, ये हम फ्लाइट की टिकट लेते हैं, ट्रेन की टिकट we खरीदते take हैं तो किसी एजेंट से खरीदते हैं ना। we take a ticket मान लो through an agent for a तुम flight. अमेरिका में हो और किसी एजेंट को फोन Imagine किया, मुझे भारत की टिकट चाहिए, we call वो an बोले हाँ agent that क्या I करना need होगा, a बोले ticket लेकिन हम for उसको पूछे तुम कभी US भारत गए हो, बोले मैं तो कभी to भारत नहीं। India. फोन रखो, खुद नहीं गया, मुझे क्या पहुंचाएगा। So if we say ऐसा नहीं that होता है। have you ever वो yourself टिकट देने वाला आदमी कभी भारत flown, देखा भी नहीं, then if we लेकिन say यदि that, वो oh, you haven't दिलचस्प flown है, वो yourself, then how समर्थ you है, can arrange a तो ticket for भले us? खुद नहीं गया, So लेकिन although he लिखा रहा तो might not भारत have पहुंच traveled जाएगा। himself, but ठीक उसी he can प्रकार still arrange इस our संसार में travel. कई ऐसे महात्मा, So कई ऐसे similarly, वैष्णव, कई in ऐसे this गुरु हैं, world, there are दिखने में हमें असमर्थ दिखते हैं, लेकिन quite a समर्थ few यदि है devotees of the Lord तो वो हमें and वास्तव Guru भगवत or कृपा, Mahan Vaishnavas भगवत प्रेम दिखा who सकते हैं। can, although तो यहाँ might पर भगवान श्री look कृष्ण बंधन में है, incapable, but they बंधे are हुए हैं। capable to कृष्ण ने सोचा चलो मैं liberate इनको us मुक्त कर from देता this हूँ। material world. कृष्ण थोड़ा सा चलने का प्रयास किए तो उखल So से गिरे, कृष्ण Krishna भी गिरे, उखल भी गिरा। tries to walk और फिर slowly, जैसे छोटे बच्चे but चलते he हैं, लड्डू गोपाल जो हमारी falls. माताओं के पास लेकर बैठे हैं, लड्डू गोपाल कैसे ऐसे चार पांव से चलते हैं, हाथ और पांव से, ऐसे कृष्ण चलने लगे, बीच में रस्सी So थी और Krishna बच्चे उखल घसीटते हुए चल tries रहे to थे। crawl कृष्ण उखल को घसीटते घसीटते चलने and he लगे। drags the हरीश जी को mortar and कह रहे थे grinder कि with इसका him. और एक नाम हो गया, So because of that, क्या नाम, घसीटा राम। there is कृष्ण का एक another नाम है name for घसीटा Krishna, राम, that is Ghasitaram, क्योंकि घसीट कर चल रहे हैं, उखल को घसीट कर because चल he रहे is हैं। crawling तो and कृष्ण dragging चलने लगे the उखल को mortar with घसीटते him. हुए, और चलते चलते कृष्ण दोनों यमलार्जुन के बीच में से क्रॉस हो गए, रस्सी भी निकल गई, लेकिन उखल जो था ऐसे तिरछा फंस So गया, he starts और to कृष्ण को cross फिर the ऐसे पकड़े trees. लगाना पड़ा। The rope and Krishna तो were able to स्वाभाविक pass, कृष्ण but the थोड़ा सा mortar and रस्सी लेकर grinder खींचे। got stuck. कई वर्षों से जड़ जमा कर ये दोनों वृक्ष खड़े थे, लेकिन So कृष्ण की एक he छोटी didn't सी have to चेष्टा put much रात भर effort, के दोनों but वृक्षों को his खड़ा कर just a दिया। little effort, अब ब्रज में तो सब he भगवान की इच्छा से होता है, was वृक्ष गिरे, able to liberate, लेकिन गिरने की आवाज and कुछ these देर के trees बाद fell आई, down. और वो कुछ देर में क्या घटना हुई, And उस वृक्ष में से दो and देवता this, प्रकट the हुए, नल voice of कुबेर the ब्रह्मा, falling trees पार्षद दोनों came little प्राप्त हुए। late. In the उन्होंने हाथ meanwhile, जोड़कर भगवान को सुंदर स्तुति किए, what happened और भगवान ने was that उनको these शुद्ध, sons श्रीलिंग of में कहा the वाणी गुणानुवाद Kuver श्रवणों कथायाम, became भगवान ने the भक्ति और प्रेम का आशीर्वाद दिया। prayed तो to the यहाँ पर Lord and got सत्यव्रत मुनि यही pure यही devotional क्या कह service रहे of the हैं Lord as benediction. कि प्रभु यदि आप ऐसा कहो कि मैं बंधा हुआ हूँ, So Satyavrat तो Muni बंधा says हुआ that आदमी if you कैसे say that आपके I'm सामने tired मुक्त and होकर how आ can सकता है। I liberate you तो प्रभु and how बोले can I अरे यही तो manifest in front of you, वाणी ग्रीव का उद्धार then किया, he says that कितना बड़ा काम कर दिया आपने, आप जैसे you अमर जीव का उद्धार किया। freed Nal और एक Kuber वस्तु and चाहिए Manigriv, प्रभु, आप दर्शन तो दोगे ही, मुझे and विश्वास है। moreover apart from that, कृष्ण भक्त बड़ो चतुर है। पहले क्या I कहा, need पहले one more कहा कि मुझे कुछ benediction. नहीं चाहिए, So the devotees of the दूसरा Lord क्या are कहा, very मेरे मन में intelligent. आपकी छवि,
So firstly, he said that I just want to have your vision in my heart, and now then please be present in front of my eyes. And now he's asking that I'm not sure that even though you are in front of my eyes, but what if I get stuck in the material existence or world? So please bless me with the pure devotional service. और सॉरी तीसरा, मुझे प्रेम भक्ति का आशीर्वाद दे दीजिए। इसलिए दूसरी लाइन में कहते हैं, So in the second line he says, तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयच्छ, तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह, न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। सो हे प्रभु, तथा प्रेम भक्ति, प्रभु आप अपनी प्रेम भक्ति मुझे oh दीजिए। Lord, please give me your pure devotional service, prema bhakti. तो शब्द का अर्थ समझिए, तथा माने यथा। So let's understand the meaning of the word. Tatha means like. You gave liberation and pure devotional service to the sons of Kuber. Similarly, please provide me. Prayach means provide. With pure devotional service that is forever and continuously and completely. That is prayacha. That means the complete love for you. नमोक्षे ग्रहो मेस्ति, हे दामोदर, हे कृष्ण, न Oh Lord Damodar, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, फिर I don't want liberation, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपकी प्रेमा but भक्ति I चाहिए just और मुझे need आपका दर्शन चाहिए। मानो भगवान का your दर्शन pure करना love चाहिए। and devotional service तो दामोदर and इह, constant इह शब्द से manifestation समझते of your हैं form. वृंदावन में। प्रभु मुझे आपको व्रज वृंदावन में, ये जो वृंदावन का माधुर्य मंडित स्वरूप है, ये जो And this beautiful form of you, of Vrindavan, should manifest in my heart. So this Damodar Swarup is only in Vrindavan Dham. It's not in Vaikuntha or Saket Dham. So Ih is important here. So it signifies or denotes this Vrindavan Dham. This is a glorious Damodar Ashtakam. And if I bring nectar of devotion, about Rup Goswami says that the goal of our life of a devotee is not liberation or Vaikuntha, but the pure love for the Lord. And if we have love for the Lord, then everything is possible. But if we don't have the love for the Lord, but we have everything, that might be lost. So please give us a benediction that we always are able to love you. And Satyavrat Muni is happy. And while Krishna is going to leave, so now Satyavrat Muni is remembering
5 things and praying to the Lord, विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नमस्ते अस्तु। so अब he's bowing down. शुरुआत हुई तब भी क्या आया? So when the Damodar Ashtakam started, he started with the salutation to the Lord. It started with the salutation or namaskar to the Lord, and it's ending with the salutation of the Lord. So when we go to see the Lord and when we are leaving, then also we should salute or bow down to the Lord. So he says that I bow down to you, and if Krishna says that to whom do you bow down to or salute to, so he says I salute to 5 things. First of all, I'm not bowing down to you, but I bow down to the rope that is tied on your belly. तो कहते हैं स्फुरित। So that what is the quality of that rope? That is Puri Dipti Dhamne. That is, it is bright effulgent rope which is transcendental. माने वो परम प्रकाशमान जो आपकी उदर पर रस्सी है, मैं उस रस्सी को प्रणाम करता हूँ जिसमें आप बंधे हुए हैं। So नमस्ते with whom you are tied. This is the first. The second, so remember first, I bow down to the rope, or then I salute to the belly. Third, I salute to Radhika Mai. Fourth, to your pastime. And fifth, finally, to you. Lastly, he saluted. He salutes the Lord. First the rope, then the belly, third the Radhika Mai, fourth his pastime, and lastly the Lord himself. And all of them are defined with their qualities in the verse. Your robe is effulgent and can illuminate the universe. And secondly, the belly, what is the quality? मैं आपके उदर को प्रणाम करता हूँ। कैसा है उदर? बोले पूरा विश्व जिसमें समाया हुआ है। So I salute to the belly which has the complete universe in itself. So I salute to that belly. So Sanatan Goswami says that the belly from which Brahma manifested and the whole universe is, where is it situated? It's in the belly of the Lord. So in the second line, and thirdly, I salute to Radha Rani.
पिछले 5 दिनों से यशोदा कृष्ण ही तो Oh, चल रहा since है. last अब यहाँ 4 राधा days कृष्ण we've कौन been है? discussing Yashoda यहाँ Mai राधा and कैसे Krishna. आए? But now, how Radharani हमारे is ब्रज here रसिक in this भक्त, pastime? ब्रज रसिक संत बहुत सुंदर कथा सुनाया करते हैं. So, in Braj there माता is यशोदा जब कृष्ण को बांध रही थी, a तो small कृष्ण के pastime अंदर that ऐश्वर्य शक्ति जो थी, वो when कृष्ण को Yashoda Mai बांधने was नहीं दे trying रही थी. to tie the Lord, कृष्ण so की ऐश्वर्य she शक्ति was कृष्ण को बांधने unable में to बाधा tie थी. because of his माता यशोदा थक magnificent गई, पसीने से लथपथ हो गई, उनके energy सारे बाल बिखर or गए, उनके ऊपर Aishwarya. कोई ज्ञान भान नहीं. गोपियों Yashoda की रस्सी was एकत्रित करके tired बांध and रही, sweating, गोकुलिकम, trying to tie the पूरे Lord, गोकुल की रस्सी and लाकर बांध रही थी. always दो there were गोकुलिकम, 2 inch ये of 2 the इंच rope का तात्पर्य less. हम अगली कथा में सुनेंगे, लेकिन 2 We'll उंगली कम पड़ी. understand the significance of that in the धन next की रस्सी katha. से कृष्ण नहीं बंधे, गोकुल की रस्सी से नहीं बंधे. So Krishna was तब not गोपियों को कहा कि अब tied बाकी रहा है बरसाना, through बरसाना the उस rope रस्सी of में the करो. home or the Gokul. कुछ But गोपी बरसाना now में, शिव go जी to राधा रानी के घर Barsana, पर पहुंची, and कहा कि they अब went रस्सी there चाहिए. to ask बोले क्यों रस्सी Radhika चाहिए? Mai बोले वहां to कन्हैया get को the rope. बांधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन And वो बंध नहीं रहा. he asked that why you need the rope, तो and छोटी सी he राधिका, said राधा that रानी रस्सी उठाती because we है, are trying गोपियों to को tie देखती the है, Lord. कृष्ण नहीं बंध रहे हैं ना? बोले नहीं, ये रस्सी से So बांधो, Radhika तो वो बंध Mai जाएंगे. gives them the rope and tells बरसाने that से if you tie with this राधा rope, प्रेम रूपी रस्सी he आई, will और जैसे ही be उसमें लगी, tied. So तो वो अपने बाप की बात नहीं मानेगा, कुछ भी once नहीं मानेगा. Radhika Mai's प्रिया की बात तो अलग है. love तो comes राधा रानी ने जब through रस्सी Barsana to भेजी Gokul, और उस रस्सी से Krishna कृष्ण को gets बांधा, tied. तो कृष्ण बंध गए. और इसलिए And नमो so राधिकाये त्वदीया प्रियाये, नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये, नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्. और इसीलिए सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि मैं उस राधा रानी को प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से, जिनकी कृपा शक्ति ने कृष्ण को आज उखल से बांध दिया है. so I bow down दामोदर अष्टकम to का the पाठ Radhika करते Mai, हुए to अब whose छोटा love प्रणाम Krishna श्री has been सत्यव्रत मुनि भगवान की tied लीला को करते to हैं the mortar कि and the नमो grinder. अनंत लीलाय. प्रभु आपकी लीला को मैं प्रणाम And करता हूं. क्यों? I कैसी salute तुम्हारी लीला? बोले to अनंत. your never आपकी ending, लीला का all कोई और pervading जोड़ नहीं है. pastimes. अनंत लीला है. लीला कैसी Your है? बोले pastimes अनंत. are आपकी लीला का कोई beyond एंड नहीं कर सकता. comprehension. They गाने वाले they गाते are रह गए, endless. लिखने वाले लिखते रह गए, सुनने वाले सुनते रह गए, लेकिन आज तक कोई इसको इति नहीं कर पाया. And nobody has been able अनंत to लीला. finish your pastime. ऐसे देव तुभ्यम, ऐसे So, अलौकिक to such असाधारण the divine, भगवान श्री transcendental, कृष्ण, supreme personality of Lord, नमस्कार of Godhead, बारंबार प्रणाम करता I हूं. salute शुरुआत नमस्कार multiple से times. और अंत नमस्कार से. इस प्रकार से आज श्री सत्यव्रत मुनि अपने So, दामोदर in that अष्टकम के way, 8 श्लोक को Satyavrat Muni समाप्त करते हैं. और expresses हम भी सत्यव्रत मुनि और श्री सनातन गोस्वामी Damodar Ashtakam. और शिल प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को लेकर पिछले 5 So, दिनों से so we इस have been दामोदर listening अष्टकम के विषय under में the guidance of Srila Prabhupada इसमें कई सारी त्रुटियां होगी. the मैं तो आम ही बड़ो मूर्ख है, मैं तो कुछ नहीं glories जानता, of Damodar Ashtakam. जीरो नॉलेज है. I am an कभी ignorant टूटा fool. फूटा होता है I have तो no इसलिए knowledge. बोलता I हूँ. might have आप committed so सुंदर many बोल के आपको mistakes, मानता है. मैं but you तो एक still आइडियल listen डिवोटी, because कोई you सष्टांगर are वाला नहीं. great. बस प्रेम है कि आप लोग आते हैं It's just और your श्रद्धा love से सुनते हैं, and your faith और हम लोग that you listen with भगवत so much चिंतन, patience and भगवत love. स्मरण कर लेते हैं. And और ये we get करते an हैं जब भगवान opportunity के नाम, to remember the Lord, भगवान का रूप आदि आता है तो हमारा समय सार्थक होता है. and बस we इस invest भावना our से time हम टूटी फूटी भाषा में in बोल लेते हैं.
listening to about the glories of the Lord. योगदान आप लोगों का है, समर्पण आप सब भक्तों का है। So आप सब श्रद्धा से भाव से इस कथा को it's सुनते हो, your तब हमारा मन हमारी faith बुद्धि प्रेरित and होती है mercy कि कुछ पढ़े that लिखे समझे। I get और इस an प्रकार से आपने हमें opportunity सेवा or में लगाए रखा। आप सबको encouragement धन्यवाद। to read and जैसे share with दामोदर you अष्टकम का पाठ करने से what I ब्रज में understand. भगवान का दर्शन होता है, तो भक्तों मन से तो नहीं, So लेकिन योग कुछ ऐसा है कि आज दामोदर not कथा समाप्त by होने जा heart, रही है, but कल हम फ्लाइट लेकर सीधे tomorrow I'm वृंदावन पहुंचेंगे। flying to Delhi and फिर Vrindavan, मिलना and वृंदावन से ही होगा। we will अगली meet कथा वृंदावन through से होगी। Vrindavan. The next katha will be यहाँ हमने from Vrindavan. दामोदर अष्टकम सुना, हाँ, वहाँ here we कथा heard सुनेंगे। Damodar और Ashtakam फिर and जैसे its मन glory, चेतना में and आया, now next we will listen बुरी to धन्यवाद the pastimes of the Lord of Damodar Leela. समग्र पटेल परिवार So एटलांटा से, I thank राधा गोपिका माता और the organizers, परिवार पेरू से, the Patel family from Atlanta, Kamla Mataji and गोधवानी their परिवार, family from वर्जीनिया Peru, से, from शिवानी सिंह Virginia, माता, मलहरी Shivani Singh परिवार, Mataji and her सभी family. भक्तों ने इस कार्तिक के पवित्र पर्व में You all have organized this और इस beautiful katha in this pious month of Kartik. भरी धन्यवाद। I'm सारे greatly, श्रोता जगत को, हमारे भक्तों को धन्यवाद। eternally grateful to all of you and all the devotees who take time and listen. And after seeing you all, we get encouragement. जैसे सत्यव्रत मुनि के पास So, प्रवचन as करने के अलावा कुछ नहीं है, Satyavrat Muni had मेरे पास nothing भी आप else लोगों को to प्रणाम करने do के but अलावा कुछ just नहीं bow है। down. So, आप सबके similarly, चरणों I में just bow पुनः down पुनः at your प्रणाम। lotus feet. That is the only thing that I can ये do. पूरा वर्ष आपने मुझे बहुत सहायता की। This आपने whole अपने year, हृदय you में have रखकर helped us a मुझे lot कृष्ण कथा and गाने के लिए gave me an सेवा में नियुक्त opportunity किया। to sing the मैं glories of आपका ऋणी Bhagavatam रहूंगा, and इस the जन्म में तो Lord, शायद ये ऋण नहीं चुका and पाऊंगा, I won't be लेकिन अवश्य able to ऋण कभी नहीं भूलेंगे। सो धन्यवाद, pay you भूरी भूरी धन्यवाद। for this. So आइए I'm eternally जीवन grateful यापन to करते all हुए of you. हम And I आज के finish सत्र को end this खत्म session करें। today by Jai Jaikar. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र